जय हिंद गाइज, वेलकम टू एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर और मैं आपका एजुकेटर नितिन मिश्रा। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी? प्लीज डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स गाइज। दिस इज सेशन ऑर्गेनाइज्ड फॉर यू स्पेशली फॉर द CAPF पेपर 2 एंड हियर नितिन मिश्रा, प्लीज नोट द शेड्यूल डाउन। आज से हम रोज आपको दोपहर में डेली मंडे टू फ्राइडे मिलेंगे 2 PM and we will discuss, prepare the paper 2 of CAPF on daily basis. So guys, before we begin to the session, I would like to draw your attention towards the peculiarities of this very session. If you truly want to make a session successful, you will have to participate in the session with the great determination and regularity. So each of the questions is taken from the previous year papers, okay, especially as I have already quoted 2017, and please guys, it is not a 30-40 minute trap and trick type of video. It is a regular academic and educational session for you, and you will have to attend it with the regularity and determination. So please ready your pen and paper, I mean अपनी notebook और अपनी कलम को please ready कर लें and attend the class regularly because attendance works. Okay, so we will be beginning up by the introduction and setting up the importance of what actually we are trying to do. In this session, as you all know that we are dealing with paper 2, paper 2 of CAPF. So here you can see that paper 2 stands for 200 marks in our examination. Further, you can divide it into 2 different categories. This is writing abilities, and then you have grammar of 25 marks. And the very important point here that I would definitely be pointing out is both the parts, whether it is writing ability or it is grammar, both are subjective, means you have to write them all. This is not the objective test, so you will have to read, understand and competent yourself for the general topics of vocabulary and grammar, because ये आपके पेपर में 25 नंबर की पूछी जाती। आज हम इसी के विषय में बात कर रहे हैं। So अगर आप ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट, आर्गुमेंट और कॉम्प्रिहेंशन के बारे में प्रश्न रखे हैं तो उसे संभाल के रखें, हम अगले किसी मुद्दे पर उससे डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 25 मार्क्स ऑफ ग्रामर जो कि आपके पेपर 2 में पूछे जाते हैं। सो गाइस, 2017 से दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। आई गेस यू कैन सी द क्वेश्चन राइट हियर। द क्वेश्चन इज गिवन इन द 6th क्वेश्चन एज ग्रामर, which is the A question, rewrite the sentence as directed. Now the direction is fill in the blank with the correct article. Okay, so the question is dash, fill in the blank. University stand for humanism, tolerance, progress, etc. What do you think? What will be the correct fill in the blank for this question? Please reply in the chat box. Guys, I'm waiting for you all. Please reply. Please do reply in the chat box. And the question is very simple, asked in CAPF 2017. मैं कोई भी क्वेश्चन खुद से लेकर नहीं आ रहा। मैं चाहता हूं कि आप इस सेशन को अटेंड करें और ये जानें कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। If we have the correct idea of the exact question type, difficulty level, then the, I guess, irony, the result, the assumption will be accurate. So as I can see, people have already answered. The correct answer for the question is option तो नहीं है, it is a descriptive. So a university. Why? Because here we have a generic, general reference. When we do not have any specific reference, when we talk in general, we use article A or N. And university always carry article A with it. So I guess आप सभी ने इसका आंसर जो दिया बिल्कुल करेक्ट किया। थैंक यू सो मच गाइस। आई गेस इस क्लास का सबसे मुख्य एजेंडा हो सकता है, सर लेट अस मेक द क्लास मोर पावरफुल, लेट अस मेक द एवरी सेकेंड यूटिलाइज्ड इन द
better way. So I won't be wasting your time. Here guys, we have the next question, that is 2. Don't see here. आप सभी जानते हैं आपके क्वेश्चन पेपर का 6वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 25 मार्क्स का होता है. एंड देयर ऑल्सो यू फाइंड 3 डिफरेंट सेक्शन, A, B एंड C. फिलहाल अभी A चल रहा है, जिसके दूसरे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं. एंड रीराइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड. अगेन आपको फिल इन द ब्लैंक यहां पर भरना है. ही ऑफन गेट्स डैश ट्रबल बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस. CAPF 2017 का क्वेश्चन है. लेवल का अनुमान आप लगा सकते हैं. क्वेश्चन की कैटेगरी, क्वेश्चन की टाइप क्या होगी एग्जाम में, आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं. एंड दैट विल बी हेल्पिंग अस इन प्रिपेयरिंग in a right direction. कई बार what we basically do, we emphasize the difficulty level of the question और हम actual से बहुत दूर चले जाते हैं. That I don't like. So guys, आप प्लीज इस क्वेश्चन का रिप्लाई करें. क्वेश्चन मैंने नहीं बताया, CAPF 2017 का क्वेश्चन है. प्लीज जल्दी से रिप्लाई करें. टेल मी इन द चैट बॉक्स. थैंक यू गाइज. चूंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं तो आप सेंटेंस लिखेंगे, दैट विल बी अप्रिशिएटेड. वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ही ऑफन गेट्स व्हाट इनटू ट्रबल. गेट इनटू ट्रबल आई गेस फॉर्म्स ऑफ फ्रेज, परेशानी में, मुश्किल में, उलझन में पड़ जाना. सो ही ऑफन गेट्स इनटू ट्रबल ड्यू टू दिस बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस. हेंस द करेक्ट आंसर विल बी इनटू. गाइज आई होप दैट आप सभी को ये समझ आया होगा. एंड फॉर योर काइंड अटेंशन गाइज, मैं चाहता हूं कि हम बिल्कुल भी समय अपना वेस्ट ना करें. आई डू नॉट वॉन्ट great deal of gossip, so I'm not focusing things here in the chat box. Why? Kyunki it is a live class. People will attend live as well as later on. So I will be replying each and every comments of your queries later on the class. Today, as we are running through the time, running out of time, so we have to go further with the next question, which is question 3rd of the 6th A section. Dash, living in this town since 2007. I repeat, fill in the blank. Living in this town since 2007. What you have to do? Fill in the blank with the correct auxiliary verb. So guys, please reply in the chat box. What do you think? Which auxiliary can satisfy this combination? And if you are watching this video right now, hurry up, please आप इसे comment box में मुझे ज़रूर लिखें. And for those who will watch it later on, जैसे जैसे आप question पे आगे बढ़ रहे हैं, comment में reply करना ना भूलें. Guys, question बहुत simple है. Since means what? Since basically means that you are taking a reference of past event that has some connection with the present time. So what do? We obviously use, or we should use, present perfect or present perfect continuous type of consequence to make it right, to make it correct. So I have been living in this town since 2007 will be the best answer for this. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. गाइज, बहुत बार मैं कह चुका हूँ, आई वॉन्ट टू क्लियर इट अगेन. मैं कोई भी क्वेश्चन अभी खुद से फॉर्म नहीं किया हूँ. वाई? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं और आप मिलके पहले ये देखें कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं. आज से पहले एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं. क्यों ना हम अपने प्रिपरेशन के व्हीकल को उसी सेम प्लेटफॉर्म के साथ आगे बढ़ाएं. सो गाइज, आप सभी ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और मुझे उम्मीद है कि आप रेडी होगे. आर यू? प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स. गाइज, रीराइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड एंड नाउ द डायरेक्शन हैज बीन चेंज्ड. द डायरेक्शन इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस. दैट गिव्स मी एन आइडिया दैट इन एग्जाम you will or you can see question based on fillers, probably preposition, verb that has to be filled. Then you can see the questions from active or passive voices. Can you reply in the chat box?
what prospective probable passive voice that you can find for this sentence? Please reply me in the chat box. Please reply my question. They have completed the work. Obviously, if it is the, I guess, question and you have to change into passive voice, the answer will be the work now has been, the work has been completed by them. I repeat, the work has been completed by them. गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। 2017 के अगर हम क्वेश्चन की सीरीज में आगे बढ़ते हैं, if we look at the questions that has been asked in the CAPF 2017, you will find this question in the 6th A, I guess as a 4th question of 6th A. So let us move further. Hope you did it well. कैसा लगा आपको? फिलहाल मैं आपको बताऊं, it is the very first day that we and I and you are interacting, so at least we should, you know, make a proper experience of what kind of question that we need to tackle in the exam hour. Thank you so much guys. Moving on to the next, the next question here is, the next question here is, the method of living happily. I repeat, the method of living happily must be known to you, and you have to change this passive sentence into active voice. And this was the 5th question of 6th A section of CAPF second paper 2017. The method of living happily must be known to you. What do you think? What should be the right answer? Hurry up guys, reply करें what expected active that you find for the question. And for me, as this is a descriptive, so I must tell you that this must be or must be known should change into must know. So you must know the method of living happily. So this is how you can answer the question, and I appreciate that maximum or majority of the students that are replying in the chat box is right. So guys, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने अभी तक इसे शेयर नहीं किया है तो टेक अ मोमेंट एंड शेयर दिस इवेंट सो दैट यू कैन हैव अ हेल्दी कॉम्पिटिशन अराउंड यू। गाइज मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्टिव एंड पैसिव के क्वेश्चन हमने देखे। देन आफ्टर एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, माई टीचर सेड टू मी यू शुड लर्न टू लिव योर लाइफ मीनिंगफुली and beautifully, and you have to change into indirect speech. Direct speech is being asked, and the direction and the examiner wants you to change this sentence into indirect speech. Can you answer? Please answer it fast. Let me know what indirect speech that you might be writing in the exam hour for the question. I'm waiting for your answer. jaldi se answer kare. Let me know the correct answer for the question. You must learn to live your life meaningfully and beautifully. Who said? My teacher said to me. And let me see the answers that are coming from your side. थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी ने इसका रिप्लाई किया, बट आई कैन सी आपने प्रॉपर इसे इनडायरेक्ट में चेंज नहीं किया है। द इनडायरेक्ट विल बी माई टीचर टोल्ड मी। ओके, दिस सेट टू चेंज इनटू टोल्ड, और आप इसे और इम्प्रूव करना चाहें, ओके, तो आप इसे दूसरे और वर्ब से फिलअप कर सकते हैं। माई टीचर टोल्ड मी दैट आई शुड लर्न टू लिव happily and meaningfully और beautifully। एक और बात यहाँ पे की जा सकती है, आप यहाँ told की जगह चाहें तो advised भी लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक सेंस आ सकता है advised का। as it is descriptive, obviously it depends on the, I guess, perspective, the way you are looking at a thing. It can be said
it can be advised. It depends upon what you are looking at. Okay, now guys, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास again is the same background, is of the same background. Now an indirect speech has been given and you are supposed to change this indirect into direct. Can you please reply in the chat box what direct speech that you can look for? Please reply me in the chat box, guys. Okay. Okay. So guys, I hope that you all are contributing your energy, your time, your efforts with this previous year CAPF question and question series. And the correct answer for the question is, mother said to me. This advised should be changed in direct speech as said to my mother. Said to me, again, as you are making a direct speech, this inverted comma is needed, is mandatory to quote the speech spoken by reporter. You shall give respect to elders. Okay, this reply will be the best one. Otherwise, you can also use should. It doesn't make any change, but better you use shall as you are transforming this indirect into direct. Okay, so mother will say you shall give respect to elders. That will make an impact or extraordinary impact. But if you look for the several answers here, in place of shall you may also find I guess should, and that is also correct, but this shall is more accurate. I hope you got my point. And if you are wondering, sir, what should we do? Obviously, it is descriptive, guys. Don't take burden on your mind. It is a descriptive kind of, I guess, answer. So it depends upon in which criteria, in which perspective you are looking at your question. The correct answer will be shall, and if you are writing should, it is not wrong, it will be accepted. Don't worry. Okay. Next, guys, let us move on to the next question. And the next question is right on the screen. Rewrite the sentences as directed. And this is the 8th question of 6th A section of your question paper. Educated and empowered women contribute richly for the development of our nation. And put the correct question tag is the direction. You have to put a correct question tag after reading the statement. Which question tag do you find more accurate here? Guys, I am waiting for your replies, and I know that आप सभी एकदम शिद्दत से, मन से, जुनून से इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होंगे. बिकॉज अगर हम कोई रैंडम क्वेश्चन लेकर आते हैं, अगर उन पर आपका अप्रोच या नज़रिया इतना सीरियस होता है, तो ये तो CAPF के 2017 के क्वेश्चंस हैं. और आप अगर चाहें तो आप इन्हें अपने जो भी एग्ज़ाम के पेपर आप देखते हैं उसमें आप इन्हें विजिट कर सकते हैं. Okay, so reply the correct question tag that you find is the best here. I can see people have replied the correct question tag will be don't they. The correct question tag will be don't they. Why they? Because we are talking about woman, which is plural. As we are talking about woman, that is plural, hence this will make sense. This plural woman should be they. So you will use don't they, as the tense is present indefinite. So the auxiliary will be don't. Subject is plural, so the pronoun will be plural, don't they. So guys, I hope that you might have I guess revising, you might have taken a look back towards what has been asked in the 2017, and probably that can be a clue, that can be a starter, that can be a good, I guess, blueprint where we can start designing our curriculum
in the same way. Thank you so much for participating. Thank you so much for your efforts and consideration. Guys, this is the next question. This is the next question right on the screen. The problem was so complicated. I repeat, the problem was so complicated that I could not solve it. What you are supposed to do? You have to rewrite this sentence with using to. आपको इसे to के प्रयोग से लिखना था as directed in the 6th A section of the paper 2017. I know that आप सभी को use of to and removal of to आता होगा. आप एक बार ट्राई कीजिए and then we will be discussing that what probable reply can be there. So guys, I'm waiting for your answer. Please reply in the chat box. Okay, thank you so much. Okay, so guys, it is time to discuss the correct answer. The correct answer is, the problem was too complicated for me to solve. This will be the first way of replying. I repeat, the problem was so complicated. आप जानते हैं so को हटाते हैं तो to लगाते हैं और that और not वहाँ पर नहीं होता. Okay? और infinitive में यानी 2 plus V1 में you form and conjunct your clauses. The problem was so complicated. Wrong. The correct answer using to will be, the problem was too complicated. किसके लिए? For me to solve. Otherwise you can make it in another way, as I should definitely tell you. आप चाहें तो इसे पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो आई है ये अलग सब्जेक्ट है और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्रॉब्लम है. दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट हैं. तो जब आप इन्फिनिटी से ऐड करते हो तो आपको यहाँ पर देखो एक ट्रांजिशन फॉर मी देना पड़ा. एंड अगर आप इनको पैसिव में बदल दो, क्योंकि ये इट कुछ और नहीं बल्कि प्रॉब्लम है, तो बात और बन जाएगी. एक और आंसर हो सकता है, द प्रॉब्लम वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व. ओके, ये आपने पैसिव बना दिया. द प्रॉब्लम वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व. दोनों ही इसके प्रोबेबल आंसर हो सकते हैं. आई एक्सपेक्ट कि आपको ये समझ आ गया होगा. गाइस, क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया. जिन्होंने अटेम्प्ट किया और जिनके आंसर्स मैच किए, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस इवेंट. ओके, thank you so much guys. I can see that majority of you is replying and is connected and live. Thank you so much guys. Next चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. Okay, next question is, एक क्वेश्चन यहाँ पे I guess रह गया है. फिलहाल आप इसे देख लें. Okay. Okay. The question is not from 6A, but अब यहाँ पे सेक्शन चेंज हो गया. A की क्वेश्चन जो थे टोटल संख्या में 10 थे और ये 6A 10 नंबर से पूछा गया था. Now it is 6B जो दोबारा पूछा जा रहा है. एंड गाइज, सबसे पहला क्वेश्चन है, give the plural form of the following words and make sentences using the plural verb. यानी आपको इसके प्लूरल फॉर्म को पहले तो बताना है. दैट प्लूरल फॉर्म क्या होगा, what will be the plural form of these very words. आफ्टर दैट आपको इसके प्लूरल फॉर्म को यूज भी करना है. एंड आपको इसके प्लूरल फॉर्म को यूज भी करना है. एल्गा, ये एक ऑलरेडी सिंगुलर वर्ड है विच इज़ अ नाउन. इसका प्लूरल आपको बताना है और प्लूरल का इस्तेमाल भी करना है. सो प्लीज़ ये दोनों ही आई गेस आंसर होने चाहिए. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. प्लूरल फॉर्म भी बताएं एंड एक सेंटेंस लिख के दें वेयर यू विल यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ एल्गा. इट इज़ योर टाइम. डू इट एंड रिप्लाई द क्वेश्चंस आंसर इन द चैट बॉक्स. थैंक यू सो मच गाइज. आप सभी लगातार आंसर कर रहे हैं. आई रिस्पेक्ट इट एंड आई गेस इट इज टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू रिव्यू द आंसर. एंड गाइज, अगर आप क्वेश्चन को देखें,
you will understand that एल्गा इज अ सिंगुलर नाउन, और जिसे आप शैवाल या काई कहते हैं, जो पानी या नमी भरी जगहों पर पाई जाती है, ग्रीन कलर की होती है, और इसका प्लूरल फॉर्म होता है एल्गाई. आई रिपीट, द प्लूरल फॉर्म ऑफ एल्गा is algae, and it has been asked that write or rewrite, one sentence using the plural form. So here are some sentences that you can at least take as a reference. Algae can function as an energy source. I repeat, algae can function as an energy source. That can be one sentence. Algae can be used to create vegetable oil. That is another sentence. So I'm using some more sentences. Algae is a great human food supplement. So guys, this is how you can see that the plural of the word noun alga is algae. Algae is a collection, or you may say plural of alga. And here we have some sentences. I hope and expect that you must understood, or you might have understood all the answers given for the prospective questions. Now it is time for the next questions of 6th B sequence, and you will have to reply the plural form of child, and you will have to use it in a general manner. So it was very simple, so I'm not taking a lot of time and giving you a suspense that what will be the plural of child. It is already universally known that children is the plural of child, and the sentence can be seen. It was easy, so I'm letting it go. Guys, next question जो पूछा गया था 2017 के CAPF में, that was formula. फॉर्मूला का प्लूरल बताना था, एंड साथ ही आपको उसके सेंटेंसेस को फॉर्म करना था. कैन यू रिप्लाई? प्लीज रिप्लाई द प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉर्मूला एंड सेंटेंसेस यूजिंग द प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉर्मूला इन द चैट बॉक्स. आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज. प्लीज गाइज जल्दी से रिप्लाई करें और मुझे बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा. थैंक यू सो मच गाइज, यू आर डूइंग रिमार्केबल एफर्ट. मैं बहुत लाइव महसूस कर पा रहा हूँ एज यू आर कीप ऑन रिप्लाइंग वट एवर कम्स इन योर माइंड. यू आर इंटरेक्टिंग, यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर रिप्लाइंग. दैट इज commendable. Guys, the word formula I guess is very known to us, and formula basically stands for some like a kind of recipe. Okay, so formula का जो plural होता है वो होता है या तो formulas, you can make it like formulas, or you can also use formulae. So ये दोनों ही इसके plural होते हैं. मैं circle कर देता हूँ so that it will be easier for you. Wait guys, yeah, okay, formulae, that will be plural of formula, and जनरली इसको फॉर्मूलाज भी कहा जा सकता है. सो आप प्लीज डाउट में मत रहना. ओके, और सेंटेंसेस आप देख सकते हैं. द प्रोडक्ट इज मेड यूजिंग सेवरल सीक्रेट ईदर फॉर्मूलाज और सेवरल सीक्रेट फॉर्मूले दैट द कंपनी रिफ्यूजेस टू रिवील. मतलब कंपनी बताने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने किन किन फॉर्मूलाज या फॉर्मूले को इंग्रेडिएंट के रूप में यूज किया है. ओके, सो आई होप एंड एक्सपेक्ट दैट दिस इज नाउ क्लियर. आपने इसके क्वेश्चंस देख लिए, इसका आंसर भी आपने दिया. थैंक यू सो मच गाइज. आप बहुत एफर्ट कर रहे हैं एंड आई होप कि आप सभी के आंसर करेक्ट हो. अगला जो वर्ड है दैट इज सिलेबस, and this is the fourth word of 6th B. ये सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं एग्जाम में. आप देख रहे हैं आपसे 2-2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्लूरल फॉर्म भी और सेंटेंसेस भी, इसलिए इनका वेटेज 2 मार्क्स का रखा गया है आपके एग्जामिनेशन में. तो आप जल्दी से मुझे बताएं सिलेबस का प्लूरल क्या होता है
and use that plural using a sentence. I'm waiting and keen to see your replies. Guys, जल्दी से आंसर करें और मुझे बताएं what will be the correct answer for the question. Syllabus. When we look at the word syllabus, it sounds very, I guess, familiar because we all have several syllabi. तो इसका यहाँ पर जो plural form होता है that is either syllabi, that is formally known, and syllabus, और आप उसमें es लगा दे, syllabuses. दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं और एग्ज़ाम में जो एक्सपेक्टेड पूछा गया है that is syllabi because this is why they are asking such kind of words. So the sentence is the syllabi, I mean syllabuses, for particular courses may have changed, means the several syllabuses or several syllabi may have changed for a particular courses. I hope you got this example right. Moving on to the next question, which is the fifth word of 6th B section of your CAPF 2017. Thesis. Thesis. आपको इसका plural form बनाना है and use it in a sentence. आप please मुझे answer करें in the chat box. I'm waiting for your replies. Thesis. So guys, when you get these very words, obviously the logic behind asking these questions is possibly they are confusion, they create confusion, or they put you in dilemma. So to make it plural, you will have to do nothing. This is has to change into es to make it plural. So this is how thesis, is considered plural of theses. Okay guys, बहुत simple है. This thesis is considered as plural of thesis. So I hope आपको ये समझ आ चुका होगा. Okay, चलो next guys, 6th C पर आते हैं. We have discussed 6A, उसके बाद we talked about 6B. 6A में 10 questions थे, 6B में 5 questions थे, पर weightage उसका 2 marks each था. Again, अब हमारे पास 6th C में फिर से questions आ रहे हैं and the direction is correct the following sentences without making any unnecessary changes. And the question is, he finds fault in everyone. आपको इसका reply करना है. Write the correct sentence and let me know in the chat box guys. Do it fast. Please guys, जल्दी से reply करें. What do you think? Is the sentence correct? If not, write the correct sentence for this without making unnecessary changes. Okay? चलो. Okay. Thank you so much guys. So guys, यहाँ पर जो prepositional error है that can be seen, faults in everyone is wrong. The correct preposition will be with, because he finds fault with everyone, means towards everyone he always find faults. Hence this with will be the accurate preposition that go with the sentence sense, that go with the sentence coherency and make the sentence correct. I hope आपको ये changes समझ आए होंगे. And in is wrong, the correct preposition will be with. He finds fault with everyone. Okay, chalo. Thank you so much guys. Moving on to the next question. The next question is, correct the following sentence again without making any unnecessary changes. And the question is, he is one of the noble men who have sacrificed his life for the nation. Did you find the error? If yes, please reply in the chat box. What will be the correct way of writing this sentence without making in unnecessary changes? Okay. Thank you so much guys. Okay, cool है, reply करें.
क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, साधारण है. इफ़ यू ट्रूली वांट टू मेक एन इम्पैक्ट, मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहूँगा. दैट विल बी एन इनफॉर्मल वे, जो कहते हैं ना कि बस नुस्खा बताने वाली बात. सो याद रखना, सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और उसका पॉसेसिव केस. पॉसेसिव केस क्या है? हिज है. इट ऑलवेज कम्स इन अ बैलेंस वे. जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब वैसा ही पॉसेसिव केस. तो यहां पे सैक्रिफाइस्ड का सेंस किसके लिए आ रहा है? बहुत सारे आदमियों के लिए आ रहा है. उनमें से एक वो आदमी है. तो आदमी बहुत सारे हैं. कौन बहुत सारे आदमी? जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है अपने जीवन को राष्ट्र के लिए, या सिर्फ इस बंदे, इस व्यक्ति विशेष ने किया है. राष्ट्र के लिए बलिदान, सैक्रिफाइस सिर्फ इस एक आदमी ने दी है, या फिर राष्ट्र के लिए बलिदान बहुत सारे आदमियों ने दिया, उनमें से ये एक. ऑब्वियसली यहां पर इसका तात्पर्य ही से निकल रहा है, विच इज रॉन्ग. ओके, मेनी मैन हैव सैक्रिफाइस्ड. मेनी मैन, क्योंकि मैन यहां पे प्लूरल है, मेनी मैन हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ फॉर द नेशन. yes or no? So this is how the correct answer for the question will be this. Guys, I hope कि आपको ये समझ आ गया होगा. It was easy, it was not as difficult as it seen. So उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को accurately किया होगा. And if you face any doubt, if you find any difficulty, I am available in the chat box later on the class, because this is, I guess, live class where I am live here. आप क्लास के ख़त्म होने पर कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को पूछें. हर एक कमेंट पर मैं उसका रिप्लाई दूंगा एंड आपके डाउट को वहाँ पे रिजॉल्व करूंगा. ओके, सो गाइज आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. अगेन यू हैव टू मेक द सेंटेंस करेक्ट. ओके, चलो, you will have to write the correct sentence without making unnecessary changes. One should always take care of his health. Did you find the error? I guess yes. Reply in the chat box what erroneous part is and how you can correct it by avoiding unnecessary changes. So guys, please reply करें. Okay. So guys, I tried very hard to conduct this session so that एक सेकंड भी आपका मैं वेस्ट ना करूं. I tried to have a less gossip and more content. One should always take care of his health. Again, as I said, subject, verb and possessive case has to be in balance. If the subject is one, verb will be according to one and possessive case will be according to one. इसे आप कहते हैं जैसा subject वैसा verb वैसा ही possessive case. Hence this his is wrong. We better use once to make the sentence correct. Okay, so we will be using once to make the sentence correct. I hope you got to the point. I hope you landed to the conclusion that what kind of questions basically our CAPF exam asks. And if it comes to prepare for this kind of exam, what should we do? Should we go towards, world of several confusing questions, or should we prepare in the same way as exam asks? And exam is asking question in this certain way. I hope you got my point. Accuracy leads to success, guys. Remember this. Next question is the fourth question of the 6th C section of our CAPF 2017. None of the 5 persons were found suitable for the job. This was the 4th question of 6th C section.
if you were a candidate of 2017, can you reply what probable answer that you were to make there? Reply me in the chat box. None of the 5 persons were found suitable for the job. Obviously there was a job and none of them, obviously not were but was. So the correct answer for the question will be was. Okay, chalo. So guys, next question is, my friend is younger than me. Can you reply? My friend is younger than me. What will be the probable reply for the question? Please do let me know in the chat box. क्या इसमें एरर है? अगर है तो बताएं सही आंसर क्या होगा. Thank you so much guys. I can see your efforts. You are continuously replying. You are committed towards your preparation. आपने बहुत अच्छा आंसर दिया. Your performance was very commendable. आप इसी तरीके से रेगुलरिटी मेंटेन करें, डिटर्मिनेशन रखें. आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपका एक भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा जो सॉल्व ना हो पाए. ओके, फिलहाल आते हैं करेक्ट आंसर पर. करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉट मी बट आई. वाई? बिकॉज व्हेन इट कम्स टू कंपेयर टू थिंग्स, जब आप दो चीज़ों की तुलना करते हैं, फॉर एग्जाम्पल I guess I can take some example with the two gadgets that I have. I have a pen, I have a cell phone. What if I compare these two things that my pen is better than my cell phone? I can't do that. Why? Because they both belong to the different category. You cannot compare two different categories or two different phenomena. If you truly wants to compare something out of them, you will have to try, get something common. If you get something common in them, you can compare that commonality. What I mean, दो वस्तुओं के बीच अगर तुलना करनी है तो वस्तुओं की तुलना यदि एक कैटेगरी में है तो की जा सकती है, अन्यथा आप तुलना तब तक नहीं कर सकते जब तक उनके बीच में कोई समानता ना हो. जैसे वजन, इसमें भी वजन है, इसमें भी वजन है. Yes, on this category I can compare and say the weight of the pen is lighter than the weight of cell phone. The color of the cell phone is darker than the color of the marker. I mean to say, आपको जिनके बीच तुलना करनी है किसी न किसी प्रकार की समानता खोजनी होगी. If you succeeded in doing that, then after you can compare. Here my friend is directly compared with me. Yes or no? Because आपने then लगाया है, my friend को compare किया है me से. My friend कौन है? Subject है. Me कौन है? Object है. Subject को object से compare नहीं कर सकते, different category हो गई. तो फिर सब्जेक्ट की तुलना किससे होगी? सब्जेक्ट से. इसलिए मैंने आई लिख दिया और ये सेंटेंस सही हो गया. उम्मीद करता हूं कि आपको ये तरीका, ये सेशन समझ आया होगा. मैंने इस क्लास में आपको एक अनुभव देने की कोशिश की कि CAPF की तैयारी की बात अगर की जाए तो एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन दरअसल पूछे जाते हैं. अगर हमको एग्जाम के क्वेश्चंस का अनुमान लग गया और हमने उन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, क्योंकि दोस्तों यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ नॉलेज लेने और रूल जानने की नहीं है. क्यों? क्योंकि कंपटीशन कहीं भी हो, मैं कहता हूं कि अगर 10 टीचरों के बीच में भी आप किसी एक पेपर को सॉल्व करवाएंगे तो कोई ना कोई एक तो ऐसा होगा जिसके प्रश्न जल्दी सॉल्व होंगे. यानी कि किसी भी कंपैरिजन का, किसी भी कंपटीशन का कुछ ना कुछ परिणाम तो होगा ही. अब बात आती है जीतता कौन है? जीतता वही है जो अभ्यास करता है. तो दोस्तों इसी बात को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि क्यों ना बात अगर अभ्यास की है, प्रैक्टिस की है, तो ऐसी प्रैक्टिस की जाए जो एग्जाम के साथ चलती हो. That is how I tried to make a session on 2017 CAPF second paper. Guys,
यदि आपको लगता है कि प्रश्न सरल थे, मेरा दोष नहीं है, परीक्षा में पूछे ही ऐसे क्वेश्चन जाते हैं, तो फिर जीत कैसे मिलेगी? जीत मिलेगी दोस्तों अभ्यास से। आपको इसे एक्यूरेटली करना है कि भूल से भी कोई प्रश्न गलत ना हो। उम्मीद है आप मेरा संकेत समझ पाए होंगे। सो दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। We have discussed a set of 2017 guys, not of 18, I'm sorry, 2017 का हमने आज एक सेट डिस्कस किया था and especially the grammar section was discussed here and I tried to let you know the exact level of difficulty and the question type that you need to practice. Further गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम में पूछा गया था, जिनसे मैंने क्वेश्चन को पिकअप किया है, वो यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं। मैंने कोई भी क्वेश्चन मैनिपुलेट नहीं किया है, प्रश्न ही यही पूछे गए थे। और अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे ऑब्वियसली आप एग्जाम के बिल्कुल करीब रहेंगे। अगली क्लास में हम 2018 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड आई एक्सपेक्ट दैट आप इसी डिटर्मिनेशन, इसी लगन, इसी जुनून के साथ क्लास से जुड़े रहेंगे। दोस्तों मैं 2 क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क देना चाहता हूं, चाहे लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड, जो इसे लेटर ऑन देखेंगे। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को लिखना ना भूलें, स्क्रीनशॉट ले लें आप। पहला क्वेश्चन यहां पर मैं दे रहा हूं, चेंज फॉर्म अफर्मेटिव टू नेगेटिव। आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव चेंज करना है। प्रश्न पहला ये है। दूसरा प्रश्न है, आपको कंबाइन करना है 2 सेंटेंसेस को। ये दोनों ही प्रश्न 2015 में पूछे गए थे। मैंने फिर से कोई क्वेश्चन अपने मन से नहीं लिया। मैं चाहता हूं कि आप उन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस करें पहले प्रायोरिटी पे जो एग्जाम में पूछे गए हों। तो उम्मीद है ये दोनों ही प्रश्न आपने देख लिया होगा। इस क्लास के सभी एलिमेंट्स के पीडीएफ आपको इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप सभी इसे डाउनलोड कर लें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि कंपटीशन और भी ज़्यादा डेंस हो, हेल्दी हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लास से जुड़ें, ताकि आंसर देने में एक अच्छा कंपटीशन नज़र आएगा, आपको भी मज़ा आएगा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा और अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। हैव अ ग्रेट एंड फैंटास्टिक एकेडमिक जर्नी। डू वेल इन द एग्जामिनेशन, वर्क हार्डर, वर्क स्मार्टली। दिस इज Exampur and I am Nitin Mishra. I will see you all in the next class. Thank you so much. Jai Hind guys.